हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू वेल। आज हम स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश बाल भारती लेसन 1.5 सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड्स इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस पैसेज कंटेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्विटेशन। दे आर। इस पैसेज में 4 टाइप के इन्विटेशन दिए हैं। फर्स्ट ए है अ फॉर्मल इन्विटेशन, बी नोटिस, सी एन ओरल इन्विटेशन, डी एन अनदर ओरल इन्विटेशन। तो यहाँ पे इस पैसेज में 4 डिफरेंट टाइप के इन्विटेशन दिए हैं। Read each invitation carefully, keeping in mind the list of 8 questions given below. Note the answer in your notebook. Verify that the formal invitation A cover all 8 points. यहाँ पे नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चन के आंसर हमें राइट करने हैं, पर ये हमें याद रखना है कि जो इनविटेशन ए है ना, फॉर्मल इनविटेशन, उसके सभी पॉइंट्स कवर होने चाहिए, उसके 8 पॉइंट्स सभी कवर होने चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज सेंडिंग गिविंग द इंफॉर्मेशन। सेंडिंग और इंफॉर्मेशन गिविंग कौन है? तो यहाँ पे आंसर सुहानी अंबेकर, प्रिंसिपल, न्यू विजन हाई स्कूल, VS अजिंक्य, टीचर इंचार्ज, ACHH कोमल शेलार एंड नितिन वाड़के, स्टूडेंट सिक्योरिटीज ACHH। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, what is the program? The inauguration of a project is the program. Question number 3, what is the name of project? Project का नेम क्या है? Seeing eyes helping hands. For number question, who will inaugurate it? तो आंसर है श्रीमती विमला नाइक, former principal of New Vision High School and President सहायक समाज। Question number 5, who will preside over the function? इसका आंसर है डॉक्टर AM चौधरी, डीन, न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइम विल द फंक्शन स्टार्ट? फंक्शन कौन से टाइम पे स्टार्ट होने वाला है? 10 AM। क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें, वेयर विल इट टेक प्लेस? फंक्शन कहाँ पे है? आंसर in the assembly hall, New Vision High School of Main Street, Girgaon. Question number 8, how many names get mentioned in the invitation? Invitation में कितने names mention किए गए हैं? तो यहाँ पे 6. Now see which of these 8 points are covered in other invitation B, C and D. अभी आपको देखना है बी सी डी टाइप के इनविटेशन में कितने पॉइंट्स कवर किए गए हैं। पुट टिक मार्क अगेंस्ट द पॉइंट दैट आर कवर्ड। कितने पॉइंट कवर किए गए हैं उनके आगे आपको टिक मार्क करनी है। तो पॉइंट कवर्ड और ABCD कौन से टाइप के इनविटेशन में कवर किए गए हैं? जिम टाइप के इनविटेशन में कवर किए हैं, उनके आगे मैंने राइट टिक बना दी है। ओके, Question number 2, prepare a formal invitation for the function you have arranged at home. It should clearly state the following points. आपके घर में फंक्शन है, उसके लिए आपको फॉर्मल इनविटेशन प्रिपेयर करना है और उस इनविटेशन में ये दिए गए जो पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे है, Mr. and Mrs. Naule according request the company of Kumar Kumari Sonali Ugle with their parents on the occasion of 15th birthday of their daughter Kiran Naule at 15th Mahesh Apartments, Main Street, Moregon on Tuesday, 12th December at 6 p.m. No presents, please, only your presence is required. Question number 3 है, write an imaginary telephone conversation in which you invite your friend to the above function. आपको ये अबाउ जो फंक्शन गया था ना बर्थडे पार्टी का, उस टाइप का ही इनविटेशन देना है, पर आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन लिखना है, इमेजिनरी कन्वर्सेशन। ओके, जैसे हम टेलीफोन पे कन्वर्सेशन करते हैं ना, उस टाइप का इमेजिनरी कन्वर्सेशन आपको यहाँ पे राइट करना है। तो यहाँ पे आंसर में आएगा, किरण हेलो सोनाली,
Sonali says, hello Kiran. Kiran says, I have called to invite you for my birthday party. Sonali says, oh, thanks. When is it? Kiran says, it's on 15th of this month. You will come, won't you? Sonali says, of course, I will. Where are you celebrating it? Kiran says, at my home, of course. Sonali says, what time should I come? Kiran says, at 6 p.m. in the evening. You must come and bring your parents along. Sonali says, I will. Thanks, Kiran. Kiran says, bye, Sonali. See you on my birthday. Sonali says, bye, I will be there. Question number 4. Imagine someone has invited your family to a program and you were the only person at home when the invitation was given orally. उसमें फर्स्ट है राइट अ नोट 4 to 5 lines to pass the message to the other people in your family. आपके घर में कोई प्रोग्राम का इनविटेशन देने आया है पर आप घर में अकेले हो और आपको आपके फैमिली के जो मेंबर है उनको मैसेज करके ये बताना है कि इनविटेशन के लिए आए थे, हम आपको बुलाया है, ऐसा मैसेज देना है। तो आप कैसे राइट करोगे? तो आंसर में आएगा Dear Mom and Dad, S. Gupta from Soham Complex called to invite us for their 25th wedding anniversary celebration on the 27th of November. She said to be at Mega Party Hall, Borivali at 8 p.m. Love, Sonali Sonu. और यहाँ पे write an imaginary conversation in which you pass on the message to your parents. आपको यहाँ पे इमेजिनरी कन्वर्सेशन लिखना है, मैसेज थ्रू पेरेंट्स को पास करना है, ऐसा वाला। तो यहाँ पे आंसर में आएगा इमेजिनरी कन्वर्सेशन। सोनाली, मम्मी, when you were away, Mr. Gupta from Soham Complex called. Mummy said, is that so? Why did she call? Sonali says it's their 25th wedding anniversary on the 27th of November. She has invited all of us. Mummy says, oh, how nice. Where are they celebrating it? Sonali says, at their house. Mummy says, what time will it begin? Sonali says, at 8 p.m. Shall we be going? Mummy says, oh yes, we will. Says Gupta is one of my best friend. We will have to go. Thanks for watching video. If you like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Like करो, comment करो, share करो. मिलते हैं next video में. Bye.